अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ इंटरमोलिकुलर forces. First of all, we see the definition of intermolecular forces: the forces that holds atom in a compound or chemical bond. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. अगर उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो यूँ होगा, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, कंपाउंड्स के दरमियान में जो एटम्स की बॉन्डिंग होती है वो कहता है वो स्ट्रॉन्ग होती है और उसे हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और जो दो कंपाउंड्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी निस्बतन वीक होती है, मीन्स केमिकल बॉन्डिंग की निस्बतन वीक होती है। Now we discuss the example hydrogen chloride. Now one atom is hydrogen and other atom is chlorine, and the bonding between hydrogen and chlorine is called chemical bonding. And the hydrogen chloride is a compound, and this hydrogen chloride is also a compound, and the attraction between two compounds hydrogen chloride, this attraction between two compounds is called intermolecular forces. Intermolecular forces are also weak than chemical bonding. Now we discuss the next example of this energies values. It required about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces. जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए वो होती है 17 किलो जूल of 1 mole of liquid hydrogen chloride molecules to convert it into gases, whereas about 430 kilojoule energy required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chlorine. But 430 kilojoule energy required to break this chemical bond means huge difference between intermolecular forces and chemical bonding. So that's why we understand this topic, that intermolecular force is so weak if we comparison this chemical bonding. That's we see the example of intermolecular forces between chemical bonding and intermolecular forces. Just 17 kilojoule energy required to break this intermolecular forces, but 430 kilojoule energy required to this chemical bond. अब जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया. We discuss the topic of all, means all concept discuss in this topic. इंशाअल्लाह अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़.